Hello students, welcome you all on behalf of Resonance, myself Srinivas Naidu, SRN sir. आज हम 25 जुलाई 2022 का शिफ्ट 1 पेपर मेमोरी बेस्ड पेपर देखने वाले हैं। ये प्योरली स्टूडेंट्स मेमोरी के बेस्ड बना हुआ है क्वेश्चन से। आओ देखते हैं किस तरह की क्वेश्चंस आया है। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग। Here N2, N2 minus, N2 plus, N2 2 minus, O2, O2 plus, O2 minus, O2 2 minus ये स्पीसीज दिया है। इसमें डायमैग्नेटिक स्पीसीज वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो हम ये स्पीसीज में ये चेक करेंगे इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में नहीं है। So N2, N2 minus, N2 plus, N2 2 minus, O2, O2 plus, O2 minus, O2 2 minus ये सारे आयन्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो तब इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और O2 2 minus में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और बाकी सभी में एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो कंपल्सरी आपको मिलेगा। तो इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो इससे ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन और O2 2 माइनस में 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सभी में एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो मिलेगा। सो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है वो डायमैग्नेटिक स्पीसीज होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला √n इंटू n+2 bm। सो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 0। सो इसलिए N2 और O2 2 माइनस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट 0 डायमैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। H2O2 on reaction with KMnO4 in acidic medium gives। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज reducing agent and MnO4 minus can act as oxidizing agent in acidic medium. So it will convert into Mn2 plus in acidic medium. MnO4 minus converts into Mn2 plus. So the answer is Mn2 plus. Next, this is a question from electrochemistry. इसमें आपको दिया है cell notation that is Zn2 plus SnX प्लस Sn। इसमें ये टिन का चार्ज नहीं दिया है, X प्लस दिया है, हमको ये फाइंड करना है। और इसमें एनोडिक रिएक्शन ये हो जाएगा जिंक Zn2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोडिक रिएक्शन होगा SnX प्लस +X इलेक्ट्रॉन्स इज गिविंग Sn। और ओवरऑल सेल रिएक्शन ये हो जाएगा Zn प्लस SnX प्लस इज गिविंग Zn2 प्लस Sn। और E0 सेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। E0 सेल ऑफ कैथोड एंड एनोड दोनों दिया है तो इसको सब्स्टिट्यूट करके E0 सेल कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.771 वोल्ट। एंड बाय अप्लाइंग नर्नेस्ट इक्वेशन E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाय 2x log Zn2 plus for x upon Snx plus for 2, and by substituting this reaction quotient it is given as 10 power minus 2. This reaction quotient is given as 10 power minus 2 and E0 cell is we calculated 0.77 and E cell is also provided 0.801. So by calculating this you will get x value as 2. So total number of electrons involved in this reaction are 2. Now this is the question from S block elements. Identify the correct density order of alkali metals. इसमें alkali metals densities you can observe it is from lithium 0.53 grams per cc, for sodium 0.97, potassium 0.86, rubidium 1.53 and for cesium it is 1.90.
So, you can observe here from left to right it is increasing, that means lithium to cesium it is increasing, but here potassium is having lower density than sodium because of more vacant orbitals in this and more volume of potassium. Next, in the following reaction sequence, BF3 plus NaH gives A plus NaF, and A when reacts with trimethyl ammonia, trimethylamine, it will is giving B, and the structure of product B with respect to boron is, इसमें BF3 when reacts with sodium hydride, it is giving B2H6, and B2H6 when reacts with the trimethyl ammonia, it is giving BH3 and NMe3. इसमें बोरान बोरान एंड नाइट्रोजन के बीच में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और विथ रिस्पेक्ट टू बोरान it is having tetrahedral shape, and with respect to nitrogen also it is tetrahedral shape, and boron has sp3 hybridization, nitrogen is also having sp3 hybridization. That is why here with respect to boron इसका shape क्या होगा, tetrahedral shape होगा. ठीक है. Next, this is from atomic structure, quantum numbers. इसमें आपको करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फाइंड विच इज नॉट पॉसिबल क्वांटम नंबर सेट ये फाइंड करना है. इसमें आपको दिया है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m0, s इक्वल टू +1 प्लस ऑफ. सो इससे आपको ये 3p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर्स है, और n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2, s इक्वल टू माइनस ऑफ, ये 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है. नेक्स्ट n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3, जब भी n वैल्यू 3 होगा l वैल्यू तो 3 से भी कम होनी चाहिए, बिकॉज फॉर l इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n-1, l वैल्यूज आर फ्रॉम 0 टू n-1, n वैल्यू के बराबर नहीं होगा l वैल्यू. सो l वैल्यू इट इज becoming equal here. So this is the impossible set for this. And here you can observe n equal to 3, l equal to 0, it is for 3s orbital electron, and it is for 3d orbital electron, it is 3p orbital electron quantum numbers. And here this set of quantum numbers is not possible. क्यों? l value m value के बराबर नहीं हो सकता. l value always 0 to n-1 के बीच में ही होगा, 0 to n-1 ही होगा. Next, 7th question, for a reaction at 500 torr half life is 240 seconds, and while at 250 torr half life is 4 minutes, the order of the reaction is. ये तो केमिकल काइनेटिक्स की क्वेश्चन है. इसमें T halves relation with pressure, we can write it as T half 1 by T half 2 equal to P1 by P2 power 1 minus n, और इसमें T halves तो आपको दिया है 240 सेकेंड्स एंड 4 मिनट्स, मिनट्स को भी हम सेकेंड्स में ले रहे हैं 240 by 4 into 60, और प्रेशर्स 500 torr and 250 torr, and by equating this you will get n value is 1, that means first order reaction. Next, it is from metallurgy. Which set of oxides does not used in slag formation during extraction of copper? So during extraction of copper, यहाँ ferrous oxide it can be used, and it can combine with silica and forms ferrous silicate, and Al2O3 cannot be used, and zinc oxide cannot be used, and nickel oxide cannot be used. Ferrous oxide and calcium oxide, these can be used as a flux and to remove the gangue and to form ferrosilicate and calcium silicate. If you use calcium oxide, it will be calcium oxide plus SiO2 can be calcium silicate,
and इसमें calcium oxide and ferrous oxide can be used as the flux. Next one, SO2Cl2 hydrolyze as SO2Cl2 plus 2H2O is giving H2SO4 plus 2HCl. अब इसमें दो एसिड्स बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl. For complete neutralization of the products, 16 moles of NaOH are required. Then how many moles of SO2Cl2 are taken initially? So इसमें पहले हम SO2Cl2 ये मोल्स मान लिया, तो इसमें H2SO4 कितने मोल बनेगा, ये मोल, एंड HCl कितने मोल बनेगा, 2 मोल. और ये मोल H2SO4 के लिए 2 मोल NaOH चाहिए, एंड 1 mole HCl requires 1 mole NaOH. That means A moles requires A moles NaOH, 2A moles and HCl requires 2A moles of NaOH. And total moles of NaOH, here HCl is taken as 2A moles. So for 2A moles of HCl, 2A moles of NaOH is required. So total moles of NaOH required is 4A moles, and 4A moles is equal to 16. Now A value equal to 4. ये value 4 means SO2Cl2 के moles initially taken are 4 moles. Now, this is the question from solution colligative properties. 40 milliliters of ionic equilibrium and 40 milliliters of 0.05 molar HCl titrated with 20 milliliters of 0.1 molar ammonium hydroxide. Then closest pH of the final solution is. ये दोनों टाइट्रेशन के बाद फाइनल सॉल्यूशन की पीएच क्या बनेगा, इसमें आप देख सकते हैं HCl स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NH4OH वीक बेस, ये दोनों टाइट्रेशन करने से सॉल्ट, दैट इज इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस बनेगा. अब ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करना है. सो लेट अस सी हियर 2 moles of HCl and 2 moles of ammonium hydroxide are taken, and you are getting 2 moles of ammonium chloride. Now the concentration of ammonium chloride is 2/60, that equal to 1/30 molar. Now pH equal to 7 minus half pKb minus half log C, and 7 minus ye half pKb will be equal to 5/2. And half log C value we are putting 1/30, then we are getting 7 minus 2.5 plus half log 30, and on solving you will get 5.24. So the nearest pH value given in the options is 5.2. So the answer can be third one. This is the question from thermochemistry. Find the enthalpy of formation of propane in kilojoule per mole using enthalpy of combustion of propane, graphite and dihydrogen. So इसमें carbon plus 4H2, 3C plus 4H2 is giving 3C3H8. This is the propane formation, and for this enthalpy of reaction can be written in terms of enthalpy of combustion as 3 into delta Hc of graphite, that means enthalpy of combustion of graphite plus 4 into enthalpy of combustion of hydrogen minus enthalpy of combustion of propane. So by putting these values, this data is given, and by putting and solving you will get 104 kilojoule per mole as the enthalpy of formation of propane. Next one, concentration of formic acid aqueous solution is 0.5 milliliter per liter. Density of formic acid solution is 1.05 gram per milliliter. If depression in freezing point is 0.0405 degree Celsius, then Van 't Hoff factor is, इसमें Van 't Hoff factor find करना है. So let us consider 1 liter solution we are taking. So it contains 0.5 milliliters of formic acid in 1 liter solution. अब इसमें density equal to mass upon volume, इसमें आप mass of solution find कर सकते हैं, that is density into volume.
यहाँ डेंसिटी तो आपको दिया है 1.05 और वॉल्यूम दिया है 0.5 मिलीलीटर. नाउ इट इज 0.525 ग्राम. नाउ मास ऑफ इट इज सोल्यूट है, it is mass of solute. Now mass of solution equal to 1 kilogram and mass of solvent we are calculating by subtracting from solution weight, we are subtracting mass of solute and we are getting mass of solvent. Now delta TF is given 0.0405 and this is equal to I into KF, that is given as 1.86, and molality, M means here molality, weight of solute by molecular weight into 1000 by weight of solvent. So, by putting these values we are getting I value as 1.9. This is the Van 't Hoff's factor for the given solution. Next, in the following reaction Br2 plus F2 gives A. On hydrolysis A obtained anion is, on hydrolysis of A obtained anion is, generally ये Br2 plus 5F2, it is giving interhalogen compound, that is BrF5, and BrF5 on hydrolysis gives bromic acid HBrO3 and HF. अब इसमें BrF5 is in plus 5 state, in HBrO3 bromine is also in plus 5 state, and this bromic acid is obtained and the anion is BrO3 minus. BrO3 minus. This BrO3 minus is said to be the bromate. Bromate is nothing but halate. Generalized term halate. So, it is halate. BrO3 minus is bromate ion and it can be written as halate ion, generalized term. BrO3 minus, ClO3 minus, these can be pronounced as halate ions. Now, this is the question from surface chemistry. Here the reaction and catalyst दोनों दिया है and we have to match this. N2 plus 3H2 gives to NH3. This is the Haber's process. Haber's process में iron is used as the catalyst. Iron is used as the catalyst and selective catalyst, its ability, इसमें remaining reactions CO plus 3H2 plus is giving methane, CO plus 2H2 is giving methanol, CO plus H2 is giving formaldehyde. इसमें आप देख सकते हैं यहाँ ये कैटलिस्ट में ये तीनों रिएक्शन में reactants are same but the products are different. So, here for different product formation the catalyst used should be different. So, इसमें आप देख सकते हैं CO plus 3H2 in presence of nickel catalyst only it gives methane, CO plus 2H2 in presence of copper zinc oxide Cr2O3 we are getting methanol, and CO plus H2 in presence of copper catalyst we are getting formaldehyde. So, this is the selective catalysis. So, by using selective catalyst we will get different products. Okay. And in this Haber's process iron is used as the catalyst and potassium oxide and alumina, this mixture is used as the promoter. Okay. So, K2O and Al2O3 and iron, this mixture is acting as promoter and iron is used as the catalyst. This is the question from surface chemistry. Next one, this is the question from coordination compounds. One of the following complex absorb minimum wavelength of light. Here the complexes are given, 4 complexes दिया है. इसमें the magnetic moment, spin only moment of that complex is, that means जिसकी minimum wavelength of light absorb करता है उस complex की magnetic moment calculate करना है. अब इसमें यहाँ ये splitting order हम देख रहे हैं. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग T2G एंड EG ऑर्बिटल्स के बीच में ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा. और ये स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा मतलब वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड विल बी
minimum. So, wavelength of light that is absorbed is minimum in case of CO CN6 3 minus, because CN minus is the strong field ligand, F minus is the weak field ligand. So, the splitting order of the given complex is like this. So, in this complex minimum wavelength of light is absorbed. That is why for this complex the magnetic moment, if you calculate, in this cobalt is in +3 state and it is having D6 configuration. For D6 configuration, if you write this in the CFT, T2G 222 and EZ 00 होगा और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस 0, क्योंकि पहले T2G ऑर्बिटल्स फिलअप हो जाएगी, उसके बाद EZ ऑर्बिटल्स फिलअप होगा. ये T2G ऑर्बिटल्स फिलअप होने के बाद ही EZ ऑर्बिटल्स फिलअप होगा. सो इसलिए यहाँ कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है. अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा. सो मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग √n into n plus 2 bm, और इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 है. सो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस 0. Okay students, I hope you enjoyed. Thank you and we will meet you again in the next paper.